Start in the name of Allah. Today I am going to start chapter number first, that is complex number from first year mathematics. So what is complex number? Complex number क्या है? वो नंबर जिसमें रियल नंबर भी हो और इमेजिनरी नंबर के लिए I will use this symbol. So I think it should better before explaining complex number, let me briefly explain the real number. So what is real number? वो नंबर जिसमें iota ना हो, those number which do not contain any iota is called real number. जिसमें iota ना हो. What is iota? I will explain it. It is imaginary unit. For example, 7 under root 3, it has no iota, you can see. Or we can also define it in this manner. The union of rational and irrational number is called real number. What is rational and irrational? Let us explain it as well so that you people better understand. So let me start from the very beginning, that is from the natural number. So what is the natural number? Natural number is those number which are used for counting. those number which are used for counting, वो नंबर जो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होते उसको नेचुरल नंबर कहते हैं. यूज्ड फॉर काउंटिंग के लिए हम नेचुरल नंबर इस्तेमाल करते हैं. नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n and natural number set is start from 1 2 3 4 and so on up to infinity. नेचुरल नंबर क्या है? वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हो उसको नेचुरल नंबर, या वी कैन से इट इज़ आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर. कभी कभार ये MCQs में भी आ जाते कि नेचुरल नंबर इज़ आल्सो कॉल्ड, सो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर. अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे कि इसमें लार्जेस्ट नंबर क्या है और स्मॉलेस्ट क्या है, सो स्मॉलेस्ट इज़ 1. इन नेचुरल नंबर smallest natural number is 1. What is the largest natural number? So that is undefined. हमें पता नहीं कि largest क्या है, so this is undefined. Let us explain the whole number as well. So what is whole number? whole number ज़ीरो और नेचुरल नंबर दोनों को होल नंबर कहते हैं. ज़ीरो, those number which start from 0, and natural number is called whole number. Whole number is denoted by capital W and it start from 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and so on up to infinity. What is the smallest number in whole number? So the smallest number is 0. What is the largest? So that is undefined. किस हमें पता नहीं कि what is the largest whole number. This is undefined. If अगर कोई ये बोले कि 1,35,366 करोड़ is the largest one, so that is obviously not. इससे भी बड़ा नंबर होते हैं. So largest is undefined for whole number. Then we have integer. This is very important. Integer is denoted by I or capital Z. So what is integer number? Perfect number in mathematics is called real number. We can define it in this manner. The word this integer has been derived from Zehlan word which means perfect. Perfect number in mathematics is called integer. इसमें ये वो decimal under root ये चीज़ें नहीं होती. So what is integer that start from, let's see what are natural number, that is 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और नेगेटिव की तरह भी आ जाए -1 2 3 4 5. इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं. इसमें सिर्फ पॉजिटिव और इसमें भी सिर्फ पॉजिटिव.
So if someone asks you what is the largest, yeah, what is the smallest integer, so this is undefined. Smallest is maybe undefined here. So what is the smallest? Someone says -9, so this is not the smallest. We have also the smaller number than this 9, we that is minus 9,983 etc. So this is undefined. We cannot say that this number is smallest integer. And what is the largest? So largest is also undefined for this. What is the largest integer? That is undefined. It is also undefined. So then we can classify it into other. We have positive integer and negative integer as well. वो इंटीजर जो क्या हो, जो ज़ीरो से ज़्यादा हो, तो उसको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं. व्हाट इज़ पॉजिटिव इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर, तो that is denoted by z, this z plus, that start from 1 2 3 4. Those numbers, those integer which are greater than 0 are called positive integer. If you people can see that positive integer is equal to natural number, this is very important. Positive number is equal to natural number, and those integer which are less than, this is minus minus, those integer which are less than 0 are called negative integer. So negative integer are -1, -2, -3, and so on up to infinity. What about 0? 0 is positive integer or negative? So it is neither positive, nor negative. It is neutral. It is the boundary. So, and if someone asks you what is the smallest negative integer, so then this is the -1 is the smallest negative integer. Oh, this is undefined, sorry. What is the smallest integer? This is undefined. But what is the largest negative integer? That is -1. Largest negative integer, that is -1. If someone asks you what is the smallest positive integer, so that is 1. What is the largest positive integer? That is undefined. That is important. Then we have rational number. So let's briefly explain it. Rational number, it is denoted by q. What is rational number? Any number which can be written in the form of p by q. वो नंबर जो p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको रेशनल नंबर कहते हैं. बट देयर इज कंडीशन, दिस इज नॉट द complete perfect definition for this. It should be noted that p and q, that must belong to integer. अगर p और q integer से ताल्लुक़ रखते हो तो फिर this is called a rational number. Otherwise it will not be rational, even it will be in this form. p और q ज़रूर integer होंगे तभी इसको rational number कह सकते हैं. For example, let me take one example, 2 by 3. So you can see this is the integer, it belong to integer. This is also integer. So this whole is rational number. ऊपर भी simple we can say rational number denoted by q. अगर ऊपर भी integer हो और नीचे भी integer हो तो बस ये rational number होगा. Let me take one example. 7 by 5, this is a rational number.
-3/11 दिस इज रेशनल, क्योंकि ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, सो इंटीजर बाय इंटीजर इज basically equal to rational number. But if I ask you this question, that 4 is natural number, whole number, integer, rational number, so obviously it belongs to natural number, whole number, integer. But what about 4 is rational or irrational? सो rational की तो हमने ये डिफिनीशन की है ना, अगर ऊपर भी इंटीजर हो नीचे भी इंटीजर हो तभी रेशनल होगी, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक नंबर है, मतलब एक डिजिट है, तो is this, yeah, if I write this thing, so this is a rational number or not? So obviously this is a rational number because इसके नीचे तो 1 है पर हम लिखते नहीं, सो ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, सो दिस इज रेशनल नंबर. तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो इंटीजर है, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, चलो ये तो वैसे भी इंटीजर में आते, दे आर ऑल रेशनल नंबर, ये सब रेशनल नंबर है, लेकिन ऑल इंटीजर आर नॉट नेसेसरी टू बी इंटीजर. ये देखो, ये रेशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है, दिस इज नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, ये सिर्फ रेशनल नंबर. ये देखो, ये 11 ये इंटीजर भी है और रेशनल नंबर भी है. So that's why we can say all integer are rational number, but all rational number are not necessary to be integer. So what is irrational number? Irrational number वो होते हैं जिसको हम cannot be written in p by q form, जो p by q form में नहीं लिखे जाते. So what we can say in simple words, अगर this is called numerator and this is called denominator, अगर ऊपर वाला not integer हो और नीचे वाला इंटीजर हो तो इसको इरेशनल नंबर कहते हैं, या ऊपर वाला इंटीजर हो और नीचे वाला नॉट इंटीजर, फिर भी ये इरेशनल नंबर है. अगर ऊपर भी इंटीजर ना हो, नॉट इंटीजर, और नीचे वाला भी नॉट इंटीजर हो, तो फिर इसको इरेशनल नंबर, या सिंपल वी कैन से दोज नंबर्स विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इरेशनल. इट इज डिनोटेड बाय क्यू प्राइम. अगर ऊपर भी इंटीजर ना हो नीचे, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है. Let me make you people clear with example. For example, if we have under root 2 by 7, this is not integer, ये integer नहीं है. नीचे वाला तो integer है, लेकिन अगर दोनों integer हो तब rational वरना irrational, so it is irrational. integer में वो हमने इससे पहले देखा कि उसमें अंडर रूट वाले ये 1.1 बटे वाले ये इंटीजर नहीं होते, परफेक्ट नंबर इंटीजर होते. अगर हम इस तरह 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 लिखे, ऊपर वाला इंटीजर नीचे वाला तो इंटीजर नहीं है, तो इट इज़ इरेशनल. अंडर रूट 7 डिवाइड बाई अंडर रूट 3, ऊपर भी नॉट इंटीजर नीचे भी नॉट इंटीजर, सो इट इज़ इरेशनल नंबर. अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि अंडर रूट 45 डिवाइड बाई 3, इट इज़ रेशनल और इरेशनल, ये रेशनल है या इरेशनल? सो यू पीपल you people have to simplify it, otherwise we have no under root in the integer. कुछ लोग इसको इंटीजर नहीं मानते तो फिर वो इसको टिक करते हैं, मतलब इरेशनल के. लेकिन इफ़ यू सिंप्लीफाई, अंडर रूट 49 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 3, सो दिस इज इंटीजर, दिस इज इंटीजर, सो दैट्स वाई इट इज इन रेशनल नंबर. अगर कोई नंबर इस फॉर्म में दिया हो, फॉर एग्जांपल 2.3, 1.423,
423 अगर कोई नंबर इस फॉर्म में हो और कोई आपसे ये पूछे कि ये रेशनल है इर्रेशनल ये क्या है, तो वी हैव आल्सो some explanation for this behavior of rational number we can say. अगर हम रेशनल नंबर को पूरा डिवाइड करें, अगर हम किसी रेशनल नंबर को completely simplify करें, तो you can get these two results. It may be terminating or recurring. या तो terminating होगा, terminating right, और दूसरा या like for example terminating mean we have a finite number of digit after a decimal point. Terminating mean we have finite number of digit after a decimal point. For example 4.237, you can see we have 3 digit after this decimal point, so it is terminating. जिसमें decimal के बाद digit ख़त्म हो, ऐसा ना हो कि स्टार्ट हो, तो इसको टर्मिनेटिंग. सो रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग. फॉर एग्जांपल you can say 1/2 is rational because ऊपर वाला भी इंटीजर नीचे वाला. if you simplify it you will get this answer. so you can see we have a terminating, decimal के बाद digit terminate हुए. so what is the behavior of rational? it is terminating. दूसरा it is recurring or we can say repeating. decimal के बाद digit ख़त्म ना हो, repeat हो रहा है, तो वो भी रेशनल नंबर कहलाएंगे. फॉर एग्जांपल 4.273 इस तरह हो. सो दिस इज रिकरिंग एंड रेशनल नंबर रिकरिंग होते हैं अगर इसको सिंप्लीफाई करें. सो वी कैन राइट इट इन दिस मैनर. जितने रिपीट हो रहे हैं उस पे ये बार लगा है. this bar means that they are repeating. 273 is repeating. so rational number is terminating and recurring, right. जिस तरह यहाँ पे मैंने आप लोगों से पूछा कि ये क्या रेशनल है इरेशनल, तो दिस इज ऑब्वियसली इरेशनल. एंड इफ यू कैन सी दिस वन इट इज़ रिपीटिंग, सो इट इज़ रेशनल. और इरेशनल वो होते हैं जो ना टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल के बाद डिजिट ख़त्म ना हो, एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट ना हो, तो उसको इरेशनल नंबर कहते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन सी दिस एग्जांपल 703. ये डेसिमल के बाद ना ख़त्म हो रहे हो ना रिपीट हो रहे, तो इसको इरेशनल नंबर कहते हैं. इफ यू पीपल कैन 27/7, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑब्वियसली अ रेशनल नंबर, क्योंकि ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, तो दिस इज इरेशनल. यू माइट नो अबाउट pi. what is pi? I will explain it in detail in later video, but now we cannot explain it. It is the ratio of circumference to diameter, but anyhow that is not important. Let me write down its value: 3.14159. and this is not terminating, non-repeating, so e is what? Pi is irrational number. Keep this thing in mind. It is irrational because it is neither terminating nor recurring. digit neither repeat हो रहा है ना terminate, तो it is irrational. if you simplify this 22/7 you will get this answer: 3.14287142857 so this is repeating. you can see what is repeating. that is repeating 1428 is repeating, so it is irrational number.
You might have heard that pi is equal to 22 by 7. This is wrong. ये कैसे बराबर हो सकती है? एक इरेशनल नंबर है, एक रेशनल है, तो दे कैन नॉट बी इक्वल, बट they are approximately equal to. Pi is approximate क्योंकि ये भी 3.14 something है और ये भी 3.14 something, so they are approximately equal. Let's also explain the non-negative integer. This is what non-negative integer. नॉन नेगेटिव इंटीजर तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव देखे, लेकिन लेट्स सी व्हाट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर. नॉन नेगेटिव मतलब इस नाम से जाहिर है कि नेगेटिव ना हो. अगर नेगेटिव ना हो तो फिर कौन से इंटीजर है? ज़ीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3 and so on. So this is, if we can see, you can see non-negative integer is equal to whole number. This is very important. non-negative number is equal to whole number. वह हमने ये देखा पॉजिटिव integer is equal to natural number, और ये नॉन नेगेटिव is equal to whole number. If someone asks you what is the smallest non-negative integer, no, smallest non-negative integer is 0. What is the largest non-negative integer? This is obviously undefined. Then we have the positive non-positive integer. What is non-positive? जो positive ना हो. अगर positive ना हो तो फिर तो 0 and negative integer. So you can say 0, -1, -2, -3 and so on. So if I ask you what is the smallest non-negative integer and what is the largest, what is the smallest non-negative integer, so कुछ लोग 0 यहाँ पे लिखते हैं. This is not the smallest. Smallest is undefined. There is a negative sign. And what is the largest non-positive integer? That is 0.